Okay, so today I'll be dealing and explaining you a part of your chapter, how do organisms reproduce, and the part which I'll be covering is sexual reproduction in flowering plants. All right. So first we'll begin with the structure of a flower. So basically flower is the most important organ which is for sexual reproduction. It is considered as the important organ which carries out the process of reproduction in plants. Okay. So the flower has basically four major parts. One of them is sepals, which you can see in the diagram. The green colored part is known as the sepals. It's like leaves, and it is located at the most bottom part of the flower. And the main function of sepals, you can say, is that it provides covering. So when a plant is immature, जब प्लांट छोटा होता है, it has not reached its growth, that time the sepals protect it from the various environmental conditions. कुछ भी environment में conditions खराब होती हैं तो sepals give protection to the flowers. Then the next part is the petals. So petals का बेसिकली फंक्शन ये होता है दैट दे आर हाईली अट्रैक्टिव, बहुत ब्राइटली कलर्ड होते हैं, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होते हैं. सो दे अट्रैक्ट इंसेक्ट्स. अब इंसेक्ट्स को क्यों अट्रैक्ट करते हैं दैट आई विल टेल यू लेटर ऑन. देन नेक्स्ट यू कैन सी इज स्टेमन्स एंड पिस्टल. स्टेमन जो होता है दैट इज़ द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ फ्लावर, and pistil is known as the female reproductive part of a flower. Okay, stamen में दो parts होते हैं. One is the anther and one is the filament. Anther and filament को जब मैं combine करती हूँ तो मैं उनको stamen बोलूँगी. And similarly pistil is categorized into three parts. One is stigma, the next one is style, and the next one is ovary. सो स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी को जब मैं कंबाइन करती हूँ तो देन आई कॉल इट एज पिस्टल. ऑल राइट. सो वंस अगेन स्टेमन इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, पिस्टल इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट. ऑल राइट. सो फ्लावर्स जो होते हैं उनकी बेसिकली दो कैटेगरीज होती हैं. वन इज़ द यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स एंड द अदर वन इज़ द बायसेक्सुअल फ्लावर्स. यूनिसेक्सुअल नेम्स से सजेस्ट कर रहा है, यूनी मीन्स सिंगल. ओके. एंड यूनिसेक्सुअल डिनोट्स ऐसे फ्लावर्स जिसमें या तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है या फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है. दैट इज दे ईदर कंटेन स्टेमन और पिस्टल. ऑल राइट. तो दीज आर यूनिसेक्सुअल, एक ही सेक्स प्रेजेंट होगा, ईदर मेल पार्ट और फीमेल पार्ट. ऑल राइट. एग्जाम्पल्स आर पपाया एंड वाटरमेलन. Then the next one is bisexual flowers. Bisexual, the name indicates bi means two. So two sexes are present, both the male and the female. So it contains both stamen and the pistil. So the examples are hibiscus and mustard. All right. Then we'll move forward and we'll study the female floral reproductive organ that is known as pistil. So I told you pistil has three parts: stigma, style, ovary. And ovary contains ovules. Ovary के अंदर ovules होते हैं. I'll tell about the function of ovules later. ठीक है. In this diagram you can see जो सबसे ऊपर वाला part होता है, the topmost part is the stigma. The female reproductive organs are colored yellow. You can see it over here in the diagram. All right. सो जो येलो पार्ट में जो सबसे ऊपर वाला पार्ट है दैट इज द स्टिग्मा. अभी स्टिग्मा का क्या फंक्शन होता है? द पोलन ग्रेन स्टिक टू स्टिग्मा. जब पोलन ग्रेन्स आते हैं वो स्टिग्मा पे स्टिक हो जाते हैं. ऑल राइट. देन स्टिग्मा से नीचे जब हम आएंगे तो वी कैन सी अ लॉन्ग ट्यूब, elongated पार्ट दैट इज नोन एज स्टाइल. सो स्टाइल का फंक्शन क्या होता है? इट कनेक्ट स्टिग्मा टू ओवरी. ऑल राइट. नाउ
the round portion in the end, we can see that is the ovary, and ovary has ovules inside it. So ovary क्या होता है? That is the enlarged structure at the base of the carpel or pistil, and inside it ovules are located. All right. And ovary forms fruit. Ovary becomes the fruit after fertilization. I'll tell you what is fertilization. जब fertilization हो जाता है, then the ovary gets converted to fruit. Okay. And what is ovules? Ovules are located inside the ovary and they contain the female germ cell or the egg cell. Alright. What is this female germ cell? This female germ cell is the female gametophyte or the egg cell which is responsible to fuse with the male gametophyte. एक फीमेल जर्म सेल एक मेल जर्म सेल के साथ मिल के फ्यूज होके जाइगोट बनाता है. दिस प्रोसेस इज नोन एज फर्टिलाइजेशन. ऑलराइट. one male germ cell and one female germ cell combine and fuse together to form a zygote, and this process is known as fertilization. So जब fertilization का process खत्म हो जाता है, this ovary gets converted into a fruit, and this ovule which has female germ cells get converted into seeds. All right. Okay. Now we'll move forward to the male reproductive organ. Alright, so I told you what it is called. It is called as stamen. The stamen has two parts. One is the anther and the other one is filament. Here you can see in this diagram, we can see 4 anthers and 4 filaments, right? Okay. So anther क्या होता है? What is anther? Anther is the part of the stamen that produces pollen. All right. Anther वो part होता है जो pollen को produce करता है. Okay. Before moving forward, जब हम किसी फ्लावर को टच करते हैं और वी ट्राई टू प्लक अप अ फ्लावर, वी सी येलोइश स्मॉल ग्रेन्स इन आवर हैंड्स. देखा है कभी किसी ने? ओके. सो दीज ग्रेन्स आर पोलन. ठीक है. तो हु प्रोड्यूसेस दीज पोलेंस? दीज पोलेंस आर प्रोड्यूस्ड बाय एंथर. फिलामेंट. फिलामेंट देख रहे हो? ओके. सो फिलामेंट का फंक्शन क्या होगा? फिलामेंट इज अ स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर दैट होल्ड्स द एंथर. एंथर को होल्ड करने के लिए जो स्टॉक और ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है उसको हम फिलामेंट बोलते हैं. ओके. सो वी स्टडीड दैट पोलन ग्रेन्स आर प्रोड्यूस्ड बाय एंथर. ये पोलन ग्रेन क्या होते हैं? जैसे कि ओव्यूल्स के अंदर फीमेल गैमेटोफाइट या एग सेल होता है, पोलन ग्रेन के अंदर मेल गैमेटोफाइट होता है जिसमें मेल गैमीट्स होते हैं. ओके. So the male gametophyte is present inside the pollen grain which is produced by anther. Male gametes जो होते हैं वो pollen grain के अंदर होते हैं और ये pollen grain कौन produce करता है? Anther. All right. So we can make a move ahead. Okay. So what are the steps involved in sexual reproduction? One is pollination, the second one is germination of this pollen grain, then comes the process of fertilization, and then formation of fruit and seed. Don't worry, I'll discuss them in detail in the next slide. Alright, what is pollination? Pollination, as the name suggests, the transfer of pollen grains from anther to the stigma is known as pollination. एंथर किसका पार्ट है? मेल रिप्रोडक्टिव का. स्टिग्मा किसका पार्ट है? फीमेल रिप्रोडक्टिव का. तो जब एंथर से पोलन ग्रेन ट्रैवल करके स्टिग्मा पे लैंड करते हैं, दैट इज नोन एज पॉलिनेशन. इट इज ऑफ 2 टाइप्स. वन इज सेल्फ पॉलिनेशन, द अदर वन इज क्रॉस पॉलिनेशन. Okay, I'll tell you what is self and what is cross. Okay, so just look at the first picture, A part, where there's written self-pollination. So here you can see anther produces pollen grains. I've already told you.
नाउ लिसन टू मी केयरफुली. एंथर जो होता है वो पोलन ग्रेन प्रोड्यूस करता है. अगर एक ही फ्लावर के अंदर उसका ही एंथर उसी के स्टिग्मा पे लैंड कर रहा है, उसी का पोलन ग्रेन प्रोड्यूस्ड बाय द एंथर फॉल्स ऑन टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर, दिस इज नोन एज सेल्फ पॉलिनेशन. एक फ्लावर है, उसके पास एंथर है, उसके पास स्टिग्मा है, तो एंथर जो प्रोड्यूस कर रहा है पोलन ग्रेन्स, दे ट्रैवल and land on the stigma of the same flower. This is known as self pollination. The other one is cross pollination. So what happens over here is we have two flowers. So anther produced in one flower travels and lands to stigma of another flower. All right. एक फ्लावर है, उसके जो पोलन ग्रेन्स ट्रैवल करके दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे लैंड करेंगे, दैट इज नोन एज क्रॉस पॉलिनेशन. ऑल राइट. Okay, so we'll move forward. The next process is germination of pollen on stigma. Now we know that pollen grains has landed over stigma. So what they do is they grow a long tube. Okay, this tube travels inside the style. All right. Here in this picture you can see there's stigma and there are pollen grains. So this pollen grain will make a small long tube. All right, it has to be very thin, and this pollen grain, this pollen tube travels all the way through the style into the ovary, and ovary has ovules. All right, so ये जो pollen tube है, इसके अंदर जो male germ cell है, all right, that travels all the way from the stigma into the style and entering into the ovule. And ovule के अंदर पे क्या था? Female germ cell. So the male germ cell and the female germ cell fuse together to form a zygote, and this is known as fertilization. And all this is occurring inside ovule. Okay. Now what happens after fertilization? The zygote has been formed. The male and the female germ cell combines to form a zygote. Now this zygote will divide into several times and form a embryo. Where is all this occurring? Inside the ovule. Now I told you, after fertilization this ovule is converted into seed, and the ovary is converted into a fruit. All right, and all the rest of the parts, that is the sepals, the petals, the stigma, style, everything else fall down. So we have a fruit, and inside it we have seeds. Okay, so I'll just give you a revision of what we have studied so far. We have studied the parts of a flower. It has sepals, it has petals, it has a female reproductive organ which is known as pistil, and the male reproductive organ which is known as the stamen. The pistil has three parts: stigma, style and ovary. Then the male reproductive part has two parts: the anther and the filament. All right. Then we have studied self-pollination, we have studied cross-pollination. If the pollination occurs within a flower, within only one flower, that is the pollen grains travel from the anther to the stigma of only one flower, it is known as self-pollination. Whereas if two flowers are involved where anthers produce pollen grains and they travel from one flower to the another, that is known as cross-pollination. Okay, two flowers are involved in cross-pollination. Then we studied fertilization, when the male gamete fuses with the female gametes to form a zygote. It is known as fertilization. And then after fertilization, we see that the ovary converts into a fruit and the ovules convert into seeds. Okay, I think I am very much clear. That's it. Thank you and have a nice day.